And before this happening, so the breaking news again, Ankit, and breaking news for our viewers, FIR registered against Raj Thackeray. Ankit, what could this be about? We are talking about the ultimatum, the May 4th ultimatum that he had given regarding loudspeakers. Already there are calls from various quarters in order to bring down loudspeakers. Uddhav Thackeray also coming under fire regarding questions about what action he is likely to take in the matter. Ankit, we believe an FIR has been registered against Raj Thackeray. Anuja is joining us, my colleague, to tell us more about the FIR against the MNS's Raj Thackeray ahead of his May 4th ultimatum regarding loudspeakers. Anuja, it's over to you. Well, yes, Aurangabad police have registered a case against Raj Thackeray and Organisers on a rally that was, held on May 1. We know that even after Raj Thackeray rally, the Aurangabad police was looking into the footage and all those videography to check whether the 16. Well, Alisha, there seems to be some problem with the phone line. We'll be getting back to you shortly, but I'd like to tell our viewers right now, breaking news right there, an FIR has been registered against Raj Thackeray ahead of his May 4th ultimatum, in which he had called for loudspeakers to be removed. And earlier in the day, we had heard the Maharashtra DGP appealing for peace and issuing as well a strict warning against disrupting law and order. Now an FIR has been registered against Raj Thackeray. And those were just visual. These are visuals of the scene outside Raj Thackeray's residence. His ultimatum regarding loudspeakers the date is tomorrow, the 4th of May. Earlier in the day, Maharashtra DGP had spoken of a number of preventive measures that the Maharashtra police are taking in order to ensure that law and order and peace and communal harmony are maintained. Among the steps are the deployment of heavy security personnel, also an appeal to people to maintain peace and law and order. Already a non-bailable warrant has been issued against Raj Thackeray about his speech he had made in 2008 in Aurangabad. And the Maharashtra DGP had said that CP of Aurangabad is looking into that matter and will follow all legal procedures. A non-bailable warrant has been issued against Raj Thackeray in that context. And our correspondents on the ground covering the story to tell us about all the latest updates on it. On one side of your screen, you see there visuals from the Aurangabad rally in which Raj Thackeray addressed a huge audience. My colleague Sujata is just outside Raj Thackeray's residence. Sujata, what can you tell us about the latest? We are hearing an FIR has been registered against Raj Thackeray. Earlier in the day, we had heard the Maharashtra DGP speaking about various preventive measures. Also joining me on the phone line is Niranjan, my colleague. Niranjan, we are talking about the FIR that has been registered in the wake of, is this part of various preventive measures? What is it all about? Give us the bigger picture. Rukma, sorry for, there was a little bit of a connection issue there with our correspondent who's right outside Raj Thackeray's house. So we should be able to get those pictures in the line through with our reporter Sujata on the ground. Basically, this morning we had the Maharashtra DGP who just, addressed the media. He spoke about preventive measures. He spoke also about what the police is doing to ensure that law and order prevails in the state of Maharashtra, given the ultimatum and the deadline issued by Raj Thackeray. And on the back of that news conference, he had also warned of action being taken by the Aurangabad police in connection with the speech of Raj Thackeray on Sunday. It was the big speech, his big speech where he gave a deadline of the 4th of May. And in that particular speech, several references were made, where one, of course, he gave the deadline for the Maharashtra government to act, failing which he said it's now or never, and that his party workers would go all out. That's point number one. Point number two, he spoke about Sharad Pawar, and he made a series of comments against Sharad Pawar,
And that was point number 2. Point number 3, he spoke about how the state of Maharashtra had been divided on the lines of caste, etc., by the NCP. Point number 4, he had also spoken about Hindutva in great detail, and spoke of how a few parties had betrayed Hindutva. Right. Niranjan, I hear that Sujata is patched from outside Raj Thackeray's residence. Sujata, what can you tell us about the FIR that has been registered against Raj Thackeray, even as there is already an NBW, non-bailable warrant regarding his Aurangabad speech on the 1st of May? या मैं 1 मई को जो औरंगाबाद में रैली थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो शर्तों के साथ थी, कंडीशंस के साथ थी, और उन कंडीशंस के बारे में कहा गया था कि अगर आप किसी को भी वायलेट करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। और इसीलिए डीजीपी रजनीश सेठ ने कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बता दिया था कि वो देख रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो देख रहे हैं उस फुटेज को, उस वीडियो फुटेज को जो उस दिन हुआ था, जो रैली में उन्होंने भाषण दिया था, उसकी जाँच के बाद वो ऐसा कहेंगे। और अब ये खबर है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है, FIR दर्ज कर ली गई है, क्योंकि उन्होंने कंडीशंस को वायलेट किया है। हालांकि ये देखना होगा कि कल किस तरह का माहौल बनता है, क्योंकि आज राज ठाकरे ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि कल क्या होने वाला है। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि आज वो ट्वीट करेंगे और बताएंगे कि कल क्या करना है। हम यहाँ राज ठाकरे के घर के बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। सुबह उन्होंने जो जितने रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं उनसे बात भी की थी, हालांकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी। इस दौरान उनसे सवाल भी पूछने की कोशिश की गई कि कल क्या होगा, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे कि कल उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, बस उन्होंने अयोध्या के बारे में बात की कि वो नेक्स्ट मंथ जाएंगे वहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर इस मामले पर लेकर अब घमासान छिड़ गया है महाराष्ट्र में, और अगर इस FIR के बाद कोई एक्शन होता है तो फिर देखना होगा कि किस तरह का माहौल कल होता है, क्योंकि आज राज ठाकरे ने कहा कि ईद पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा, कोई महाआरती नहीं होगी। कल क्या होगा वो बताएंगे, कल क्या करना है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो ट्वीट करेंगे, क्योंकि जब वो ट्वीट करेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि कल क्या होगा। इस बीच जैसे कि हमने आपको बताया, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। 149 का नोटिस बहुत से जो MNS वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको जारी किया गया है, यानी बहुत सख्ती बरती जा रही है। और होम गार्ड्स और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी पर्सनल्स को तैयार किया गया है, कल किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। लेकिन अगर ये FIR उनसे जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की तो बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको कहा गया कि शायद कुछ हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है, तो बिल्कुल भी उन्होंने उस पर रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने उसको हंसकर टाल दिया। तो अभी हमें इंतजार करना होगा इसके बाद क्या मुंबई पुलिस कोई एक्शन लेती है। Well, we'll be back with you in a short while from now. I'd like to tell our viewers that we are going over to our Delhi studios where we are joined by Shivangi. Shivangi, it's over to you for more on this breaking story. Right. So this is a big story that we are breaking right now. 2 days after the mega rally of Raj Thackeray, an FIR has been registered against Raj Thackeray for that rally that has taken place. I want to go straight across to my colleague on ground now. Now this is big. Now the Aurangabad police had already said that we will examine the tapes, and now the tapes have been examined. What are the details of this FIR? What are the details of this FIR? Could you, Sujata, what are the details? This is the big story we are tracking right now on Republic. 2 days, just 2 days after the mega rally of Raj Thackeray, police action on Raj Thackeray over the Aurangabad speech. Now, we knew that the police would review all these tapes. There were 16 conditions which were put. Sujata, I want to go straight to you. Sujata, exactly. Sujata is right outside Raj Thackeray's residence. Sujata, if you can hear me, Sujata, now do you have the details of this FIR? Why did the police have objections against Raj Thackeray's speech?
या शिवांगी, बिकॉज वो प्री कंडीशंस थी जब उनको अलाउ किया गया था उस रैली के लिए, तो कंडीशंस लगाई गई थी क्योंकि औरंगाबाद पुलिस को ये लगता था कि जब वो वहाँ पर जाएंगे तो इस तरह की अगर बातें कहेंगे, खासतौर पर रमज़ान के महीने में अगर वो ये बात कहेंगे कि हम मस्जिद से लाउडस्पीकर उतार लेंगे, अल्टीमेटम देंगे, जैसा कि उन्होंने 3 मई का अल्टीमेटम पहले दे रखा था, तो उनको इसीलिए पहले वो अलाउ नहीं कर रहे थे। बाद में उन्होंने कंडीशंस लगाई और उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा गया था कि आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कि माहौल ख़राब हो सकता है। बाद में उस स्पीच को रिव्यू किया गया है, मैं खुद भी वहीं पर थी औरंगाबाद की रैली में ही, और उसमें कुछ एक लाइन्स जो है जिस पर ऑब्जेक्शन है और उसी को लेकर ये FIR दर्ज की गई है, जो कि प्रोवोकेटिव है, जो भड़काने वाली है और हिंसा के लिए उकसाती है लोगों को। तो ये इसी तरह से FIR में मेंशन है वो लाइन जिसमें उन्होंने ये कहा। सुजाता, होल्ड ऑन, सुजाता होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए सुजाता। आई वांट टू गो अक्रॉस टू माय कोलीग सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, this is a big story that we are breaking right now on Republic TV. FIR against Raj Thackeray for that speech that has been made. What are the details you're picking up? देखिए, औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही जो आयोजक थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के DGP के साथ मुलाकात हुई, चर्चा हुई, इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई, इसके बाद औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मैं इस समय राज ठाकरे घर पे मौजूद हूँ। सुबह है, राज ठाकरे घर पर मन से कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मीटिंग